love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने लिए पीडीएफ एनक्रिप्टर एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं, जिससे आप कोई भी अपनी प्राइवेट पीडीएफ जिसको आप लॉक करना चाहते हैं, पासवर्ड से एनक्रिप्ट करना चाहते हैं, वो इजीली कर पाएंगे। तो फर्स्टली उसके लिए हमें चाहिए होगा एक पाइथन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर एंड हमें एक फोल्डर क्रिएट करना होगा जिसका नाम होगा पीडीएफ एनक्रिप्टर। मैंने ऑलरेडी इसको क्रिएट कर लिया है, तो ये रहा फोल्डर। और यहाँ पर हमें चाहिए कि पीडीएफ फाइल, जैसे मैंने इसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है अटैच। तो फर्स्टली हमको इसको ओपन करना है अपने पाइथन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, दैट इज विजुअल स्टूडियो कोड। एंड नाउ आई विल गो टू द फोल्डर and click on the add files and pe.py, that is our Python encryptor of the PDF file, and hit on enter and import the module named as PyPDF2 as PDF. So import PyPDF2 as PDF output equal to PDF file writer and put brackets and click on read PDF equal to and PDF file reader and give open command, that is py.pdf, and give as rb, and the next line we will write for p in range read pdf dot get num pages, and now we will do double bracket in the last line, and in the next line we will write output dot add page read pdf dot get page p, and hit enter, and in the 12th line we will write output stream equal to open command. Our new PDF name will be encrypted PDF extension PDF.pdf wb. In the next line we will write output dot encrypt
and our PDF file password will be 2424, and we will use 128 bit equal to true, and in the next line we will write output dot write output stream and close it, and the next line we will write output stream dot close and two brackets, and this is our final code, and our code is completed. So now we will run it and click on the play button, and you can see our encrypted PDF is ready. So I will go to our folder and click on it, and our PDF file is opened, and it is asking for a password. Our password is 2424, that is assigned it here, and we will click 2424 and click submit, and our PDF file is opened. So you can see that our code is working. If you like the video, like, share and subscribe my channel, and hit the bell icon for the latest updates.